आज हम ट्राई करने वाले वर्ल्ड स्मेलिएस्ट फ्रूट। हाँ, सही सुना आपने, वर्ल्ड स्मेलिएस्ट फ्रूट। ए फ्रूट दैट इज बैंड इन कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स बैड स्मेल। बट इससे पहले कि हम यहाँ पहुंचे, लेट्स स्टार्ट हियर। This is a place that I call my home. Today we are going to visit the topmost places in Da Nang. और आप अगर Da Nang आने का प्लान कर रहे हो या निकल गए हो तो ये वीडियो तो देखना बनता है बॉस। And I for you from me. Oh, I'm here, and it's time. खाने का बहुत सीन हो रहा है यार। यहाँ पे बानमी भी नहीं है। बानमी शायद कल के व्लॉग में दिखाया था, क्या था। सब जगह अलग अलग डिश का नाम लिखा है, गूगल कर रहे हैं, बट सब में कच्चा राइस है, सूखा राइस है, सूखा राइस सॉरी, पता नहीं। अभी आज तो लंच भी नसीब नहीं है शायद, देखते हैं। चलो क्रॉस। ये कौन सा बीच है? माइकी बीच। लोग कहते हैं Da Nang नहीं आना है, लेकिन ये माइके बीच पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, औसम मौसम। अभी तो बस देख रहे हैं, रात वापस आएंगे थोड़े टाइम के बाद। फिलहाल मार्बल माउंटेन्स की ओर। इधर आया है ना, तभी खाने का जुगाड़ नहीं हुआ, पता है। तो यहाँ पे अगर आओगे मार्बल माउंटेन में तो Da Nang में कुछ खा के आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। There is a very interesting story about the Marble Mountain, which we came to know when we came here. According to Cham legend, one day a dragon flew to Non Nyok beach and laid an egg there. After a very long time, the egg hatched and a very beautiful lady stepped out of it. The eggshell was broken into 5 pieces that became the 5 magical mountains as we see today. In 1825, Emperor Min Mang named the mountain complex Marble Mountains. Each mountain was named after one of the 5 elements of Eastern philosophy: metal, water, fire, wood, and earth.
what we see behind us is avatar of Buddha now. When you look at it, it feels like a peaceful idol who is blessing us with his grace, and on top of the Buddha it looks like a 9-headed serpent dragon. This whole complex seems like a house of that dragon, and the orbs around him feels like 5 cameras of his time keeping a watch on the world. Now we are going to a different cave. Hope it is much better, much grander, much anticipating that we can see something new and something awesome. Let's see what happens. The public here are all not well versed with English, so it is a bit difficult. But if you keep an attitude of exploring and keep looking here and there, you will finally find what you are looking for. भाई साहब क्या सीढ़ी है, हालत हो गया। इससे 10-15 किलो कम हो गया रहेगा। जिम जाके भी यही हालत है, फिर जिम नहीं जाके क्या हालत होगा। ये गोरा भी थक गया दिखता है। Right now we are on the top of the Marble Mountain with an amazing sea view. We can see the whole city from here with a bird's eye view. It feels amazing from here. Okay, let's keep exploring. मैं गिर गया फिसल के और हाथ में पूरा कैक्टस का कांटा घुस गया। अभी किधर है कैक्टस? मैं झूठ नहीं बोल रहा है, 1 मिनट देखो, भर भर के कैक्टस है, पूरा हाथ में चला गया। इतना हाथ कभी नहीं दुखा है जितना आज दुख रहा है। व्यू के चक्कर में हाथ के लग गए। हाँ, फाइनली। According to the locals, this is a Hindu temple built in the 4th century. I feel proud that a person of same origin, me being a Hindu, built this temple at a time when there was no machinery like that is today. So you can look at the temple. I feel that this grandeur cannot be captured within the camera, but still we will give you a glimpse to show that what great people were there at that time and they could do, which today technology cannot think or bring to reality in today's time.
हर एक जगह का अपना एक एक्सपीरियंस अलग है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सुबह जो हम लोग ने ग्रैब लिया था उसको 125 डोंग लगे थे, तो ड्राइवर ने कहा कि जाते टाइम भी हम लोग मेरी गाड़ी से आ जाओ तो वो 100 डोंग लेंगे। और हम लोग को अंदर इतना टाइम चला गया, ऑलमोस्ट 4-5 घंटा चला गया। अभी पता नहीं वो भड़का है कि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। thời gian nước अपने लैंग्वेज में कुछ तो mình không tính thời gian với bạn. I don't count your time. इंडियन खाना चलेगा क्या पूछ रहा हूँ। क्या करने का? चलेगा, खा ले। Okay. Đi với When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. कुछ बनना चाहो तो हवा के जैसे बनो, जो सबको ठंडक दिला दे लेकिन दिखे नहीं, कुछ देने का एहसास ना दिला दे। I don't belong here. When we did our research about this Lady Buddha statue, we heard a lot of negative comments on the net that this is a very artificial place and doesn't feel true to its time. But after experiencing this site, we feel that a visit here is worth your time. You need to come here with some major 2-3 hours so that you can look at every intricate detail, like the trees here. When you see, they are being put lot of love and care to bring them, guide them to that shape. Other things like the statues, other than the Lady Buddha statue, is also worth looking, because every statue has a different variety, view and what you say, auspiciousness to it. La 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 ла-ла-ла-ла-ла. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем «Я люблю». Ты далеко-далеко, смеются даже небеса. Но мне легко, так легко, и верю я в чудеса. Верю я в чудеса. Верю в чудеса. Верю я в чудеса. Привет, привет, ты не спишь, опять сидишь тут по ночам. Ну почему ты, малыш, так смело веришь мелочам? ठीक है। वो एक फॉरेनर ने बोला था पकेला केल। आफ्टर टेस्ट ऐसा अंदर जाने के बाद जो टेस्ट और स्मेल आता है वो थोड़ा खराब है। स्टार्टिंग में खाते टाइम अच्छा लगता है। टेस्ट अच्छे है। कसं नाही डिशेस ठीक है, वर्ल्ड स्मेलिएस्ट फ्रूट। Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню, пока еще. Hope you guys liked the video. We tried our absolute best
एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल शो सम लव. थोड़ा प्यार बांटो यार, मतलब प्यार बांटने से बढ़ता है. इतना मेहनत करने के बाद आपको वो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बढ़ जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है दिल को, सच्ची में अच्छा लगता है दिल को. कभी आपने भी ट्राई किया रहेगा ऐसा यूट्यूब पे, तो आपको भी समझेगा कि एक सब्सक्राइब की कीमत क्या होती है. सो अभी के लिए बस इतना ही. वही प्यार वाला कॉन्सेप्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एट हनोई. मेरे को होयन और हनोई में बहुत कंफ्यूजन होता है ये सब नाम में, तो फिलहाल के लिए आपको मिलेंगे हम हनोई में. एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. There is a tree as old as me, by the cracks of his skin I climb to the top. I come a tree to see